की आज हम बात करने वाले हैं क्वेस कॉर्प के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर। साथ ही साथ बात करेंगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर कंपनी की क्या प्लानिंग है। सबसे पहले लेकिन हर बार की तरह कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। कंपनी जो है इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। स्टाफ आउटसोर्सिंग के बिजनेस में ये कंपनी है। ग्लोबल टेक सोल्यूशन वर्कफोर्स मैनेजमेंट का भी बिजनेस करती है। कंपनी के पास करीब 3000 क्लाइंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, एपैक और मिडल ईस्ट में इनकी मौजूदगी है। तो मेरे साथ कंपनी के CFO रवि विश्वनाथन जी जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो मैं इस समय जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उस पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अब धीरे धीरे जो सिचुएशन है कोविड की वो पीछे रह गई है, ऑफिसेज खुल रहे हैं। आप चूंकि ग्राउंड पर हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या आपको दिख रहा है सिचुएशन? स्टाफिंग का बिजनेस फिर से बढ़ रहा है, हर सेक्टर में लोग फिर से हायरिंग कर रहे हैं? बिल्कुल। ये staffing has actually come back to pre-COVID levels quite some time back, and we are seeing a very strong pickup across the sector. I mean, while the recovery for us in the BFSI sector was particularly spectacular in the last couple of years, thanks to the fintech companies taking charge during the pandemic and after that. But post in the last 6 months, we have seen the manufacturing picking up pace. We've seen retail coming back. We've seen telecom coming back strongly. E-commerce has been strong over the last couple of years, except for some small players who have actually fallen by the wayside. Otherwise, some of the large players continue to be dominant. So I think by and large, we are seeing a broad-based pickup in hiring across the length and breadth of the country. This is what we are seeing. We had a very strong, exceptionally strong Q1 in terms of our headcount growth in general staffing, and we continue to see the same kind of momentum in Q2 and for the remaining part of the year as well, actually. IT स्पेस की बात मैं स्पेसिफिकली करना चाहूँगा रवि आपसे। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है थोड़ी स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। जो डेटा हमारे सामने है उसमें ये कहा गया है कि रिकवरी शायद आएगी, लेकिन 15% CAGR की बात की जा रही है। 22-25 FY22-25 के बीच में ये एस्टिमेटेड है। आपका क्या गाइडेंस है IT स्पेस को लेकर स्पेसिफिकली? We are the largest suppliers of manpower from a contract staffing perspective to the IT companies in the country. We are the number one player, and I think a 15% growth rate for companies like us is an absolutely doable thing. Actually, there's no problems at all. The base is small. The Indian IT companies have just about started outsourcing. Actually. The whole concept of contract staffing is very, very new to the Indian IT staff. For Indian IT companies. And so a 15% growth is absolutely, it should be like a walk in the park for the IT staffing companies that operate in our country. So there should not be any problem from our perspective. From our perspective, a 15% growth, CAGR growth between 22 to 25 is absolutely doable from an IT staffing perspective. What we should focus on is trying to see if we can improve the margins in the IT staffing business. That will come. That's what we've been doing. For the last couple of years, we've pivoted towards higher margin mandates compared to the lower margin mandates that we would do earlier. We've pivoted to the higher margin mandates over the last few years, and that's something that we as a company will continue to focus on for the foreseeable future. मार्जिन्स पे ही मैं अगला सवाल पूछना चाहता था आपसे, क्योंकि कई एनालिस्ट का ये कहना है कि जो स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग है वो जो बिजनेस है उसमें मार्जिन बेटर होगा। यहाँ पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? क्या आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा फोकस स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग की तरफ करें तो शायद मार्जिन्स बेटर हो पाए? They're absolutely right. The margins in my general staffing, if you take the gross margin, my gross margin in my general staffing business is about 3%, and the gross margin in my IT staffing is close to 20%. Actually. The business models are very, very different between IT and general staffing, but notwithstanding that, there's a big difference in margins. So definitely there is scope for specialized staffing across various verticals, actually. Given that we have a fairly substantial exposure to the BFSI sector, a time will probably come in the near future where we will start doing specialized staffing in the BFSI sector
And because we have fairly large headcount presence, we have a fairly large expertise. I mean, our expertise is fairly deep. So we will definitely get down to doing specialized staffing in the BFSI sector and start attracting. I mean, and we will definitely get higher margins compared to the 3% that we get today. I mean, that is the way forward for all staffing companies, is to move towards specialization, which will result in higher value add, thereby getting higher gross margins and overall margins. करेक्ट। आपका जो एक्विजिशन है मॉन्स्टर, उसकी बात करना चाहेंगे। आपने कहा था कि वो बहुत जल्द जो है, आई मीन FY24 तक शायद एस्टिमेट ये है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी क्या सिचुएशन है? आई मीन हाउ मच कैश आर यू बर्निंग? कितना, कब तक आपको लग रहा है कि वो पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंच जाएगा? देखिए, मॉन्स्टर तो ब्रेक इवन हो चुका था Q2 Q3 ऑफ लास्ट ईयर में ही, which is what gave us the confidence. Which is what gave us the confidence to go and raise external capital, and that's what gave the external investors also confidence that yes, this company has reached break even once and can reach break even over a period of time. Where was the money? Where is the money going to be spent? The money that we raised as external capital is going to be spent on product development, sales, and marketing. This is what will help us get to where we want it to be. So we think in the current year, we will probably burn about 100 crores, of which about 30 crores will be in the form of non-cash charge, ESOP charge hoga iska. So we think there'll be about 100 crore of charge in the current year, of loss of Monster in the current year. But we are fairly confident that we'll be able to absorb it and move on. But like I said, between Q3 and Q4 of next year, Monster will turn break even despite the increased spending, and will continue to kind of grow thereafter. I've always been saying this for a while now, that India has the potential to be the talent capital of the rest of the world, and that sentiment is being expressed by a lot of other people as well currently. And given that Monster's presence is not just in India, Monster is present in India, I mean, at least from our perspective, Monster is present in Middle East, India, and the Southeast Asia. It gives us a very good footprint to kind of grow from here onwards and make it a very, very different product compared to what it is today. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आपने पहले भी ये कहा है कि अब आने वाले दिनों में कोई नया M&A नहीं होगा, नया एक्विजिशन आप नहीं करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी नेक्स्ट देन? आप नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगी, कैसे होगी? ऑर्गेनिक ग्रोथ में इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि to look at M&A would not be a good thing at all. There's so much growth. If you take the general staffing business, we can continue to grow at 20% for the next 15-20 years. That's the amount of opportunity that we have. So most of the businesses that we operate at can easily grow at 15 to 20% in an organic way for the next 5 years, for the next 10 years. So why do an M&A actually currently? And that's the reason, and that's the philosophy that the whole board and the management has been taking for a while. So we don't have any deals in the pipeline as we speak. But having said that, I'm not going to say we will never do it. If there's a very attractive deal that comes along, it would be foolish on our part to pass it actually. So we will be very strategic. We will just play it by the year. And if there's a very good deal, we will definitely consider it before we say yes or no to it actually. सर्टनली। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को अपने प्लान्स बताने के लिए। रवि विश्वनाथ क्वेस कॉर्प के यहाँ बता रहे हैं कि ग्रोथ आएगी नेक्स्ट ऑर्गेनिक तरीके से। फिलहाल कोई M&A नहीं हो रहा है। 15% की CAGR ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल है इजीली IT स्पेस में खासतौर पर, और उसके अलावा स्पेशलाइज स्टाफिंग जो है उसमें से भी जो है मार्जिन्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए आपको, पूछते हैं मेरे अगले मेहमान से। अविनाश गोरक्षकर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। क्या कॉल दे रहे हैं इस समय आप क्वेस कॉर्प पर? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए जो रिक्रूटमेंट वाली कंपनियां हैं वो मार्केट्स में गिने चुने कंपनियां हैं और ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है। तो इस बारे में मैं यही कहूंगा कि क्वेस कॉर्प मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में अपटिक आ रहा है, नॉर्मल सी आ रही है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्रूटमेंट वाली कंपनीज है
उनको डेफिनेटली काफी फायदा होगा। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने भी कहा है कि काफी स्टेडी ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और होपफुली अगर इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो करती है तो जो सेक्टर्स है वहां पे अभी ज्यादातर कॉर्पोरेट कैपेक्स हो रहा है, तो ज्यादातर फैसिलिटीज आएगी, तो नए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको 1.5-2 साल का नजरिया लेना है, ये बहुत अच्छी कंपनी है नजरिया, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इसमें कोई बड़ी बढ़त ना आए, बट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली पोर्टफोलियो कैटेगरी वाला स्टॉक है, तो इसमें निवेश करने की डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखिए। ओके, तो अगर आपको क्वेस कॉर्प से रिटर्न चाहिए तो लंबे नजरिए के साथ आपको इस स्टॉक को अप्रोच करना चाहिए। स्टॉक को आप ले सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लंबा नजरिया होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।